felicitate Advocate Krishna Alavaruji, Joint Secretary, All India Congress Committee and National in charge of Indian Youth Congress. A huge round of applause, my friends. We are witnessing a historic moment where the dignitaries are being felicitated by our Honorable Executive President, Shri Rahul V. Karat, sir. Ladies and gentlemen, we are starting with the first session of the 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. The theme of this session is freedom of speech, where to draw the line. The freedom of speech is often regarded as a crucial yardstick for a society's level of civilization. While freedom of speech commonly holds a positive connotation, it has also been shrouded in controversies and debates. Let us discuss. Before proceeding with this session, I shall request my technical team to relay the session video. Over to my technical team. This session is based on freedom of speech, where to draw the line. Freedom of speech has long been recognized as a vital cornerstone of a free and democratic government. Nonetheless, it has also long been recognized that these freedoms cannot be unlimited. While its importance remains beyond doubt, recently the primacy of freedom of speech has increasingly been challenged by political scientists, jurists, and politicians alike. From long-standing concerns about hate speech and more recent fears about no platforming and fake news, questions about the just and proper limits to that freedom are being confronted by democratic societies the world over. By bringing the hitherto divergent scholars of the subject together, the agenda seeks to represent a major step forward in understanding and addressing some of the most pressing challenges facing modern liberal democracies. In this session, we are going to discuss the right to freedom of speech. As we all know, freedom of speech is a fundamental democratic right, but every freedom comes with a certain number of responsibilities. Here, we will throw some light on the part of responsibilities allied to freedom. The Constitution of India provides us with the freedom of speech via Article 19, but not in an absolute way. Certain restrictions have been imposed on this freedom. Therefore, it becomes important to understand where to draw the line while exercising this freedom of speech. जब हम भारतीय छात्र संसद की बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ी भूमिका होती है छात्रों की, उनकी सोच की, उनकी धारणाओं की। तो चलिए सुनते हैं उन सभी छात्र सांसदों को जो आज के हमारे इस बहुत ही आवश्यक विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। It is very important to know their views. I would like to invite our first student leader of the session, Ms. Aditi Dwivedi, all the way from Chhattisgarh. Please give her a huge round of applause, my friends. कई मौलिक कर्तव्य दिए और कई मौलिक अधिकार दिए, नियमों उपबंधों के जरिए भीम गांधी के सुविचार दिए। हम अधिकार तो चाहते हैं पर कर्तव्यों को भूल गए, संविधान की अच्छी बातें कब के फांसी झूल गए। इस महाग्रंथ ने भारत को अधिकारों की आबादी दी, कोई बंधा सा खुद को ना पाए, अभिव्यक्ति की आजादी दी। यह आजादी मिली हमें राष्ट्र के महिमा मंडन के लिए, पर दुरुपयोग हो रहा है इसका माँ भारती के खंडन के लिए। नमस्कार पुणे, शिवाजी महाराज की पेशवाई भूमि को छत्तीसगढ़ की बेटी का नमन। इस सभा में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मेरे युवा साथी एवं समस्त सभाजनों को मेरा सादर प्रणाम।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की बात, वही मन की बात जो हमारे प्रधानमंत्री अक्सर किया करते हैं। और हम सभी भारतीय नागरिक अपनी अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। हम सभी के हाथों में टुनटुना रहे स्मार्टफोन में एक ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो 100% मौजूद है। इन पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब तक यह आदान प्रदान भाई बहन दोस्त यार और नाते रिश्तेदारों तक सीमित है तब तक तो बात सुगम है, परंतु जब कोई व्यक्ति किसी नेता, अभिनेता, संघ, समुदाय या देश के बारे में अपने विचार बयां करने लगता है तब यह आलोचना का एक विस्तृत रूप ले लेता है और तब जन्म लेती है जरूरत लक्ष्मण रेखा की। क्योंकि लोग तो महज अपनी उंगलियां चला अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अगले ही क्षण भूल जाते हैं, परंतु कौम के ऐसे ही बयान निंदा का एक सागर भर किसी के निजी एवं व्यवसायिक जीवन में तूफान ला देते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक सुप्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोगों के आपत्तिजनक बयान हटाने का अनुरोध किया, परंतु उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर भारत सरकार को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहिष्कार किया जाने लगा। यह नवीन भारत है जो संविधान में युक्त कानून एवं लक्ष्मण रेखाओं से प्रशासित है। यह लक्ष्मण रेखा परम है, यह लक्ष्मण रेखा सर्वमान्य है। इसे लांघने का अधिकार ना किसी व्यक्ति विशेष को है और ना ही किसी संघ समुदाय को। इस राष्ट्र मंच के माध्यम से मैं अपने युवा नेताओं से गुजारिश करूंगी कि वे सभी संवेदनशील विषयों पर कार्यरत हों एवं अपने अधिकारों के साथ साथ आई जिम्मेदारियों को समझें। साथ ही वे सभी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपरिहार्य हथियार के रूप में इस्तेमाल कर देश में सकारात्मक बदलाव की लहर लाएं। चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह बात जो तुमको चुप गई, तुम्हारा लहू जरा सा खौल गया, बात तुम्हारे कर्तव्य की आई, तुम चादर ओढ़कर सो गए, और बात तुम्हारे हक की लड़ाई, तुम देश विरोधी हो गए। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है अदिति, थैंक यू सो मच। I would request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karat sir to felicitate Miss Aditi. A huge round of applause, my friends. Congratulations, Aditi. I would call upon our next student leader, Mr. Pratap Raj Tiwari, all the way from Madhya Pradesh. पुणे की इस पावन धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अपना नमन करते हुए मैं प्रताप राज तिवारी, मध्य प्रदेश राज्य से भारत मां का सेवक, आप सभी को अपने तहे दिल और आत्मा से भारतीय छात्र संसद के इस गौरवपूर्ण मंच के द्वारा आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, सोचिए क्या हो यदि सूर्य अपनी लक्ष्मण रेखा लांघकर पृथ्वी के निकट आ जाए, या नदी और समुद्र अपनी सीमा पार किसी आबादीय क्षेत्र में दाखिल हो जाएं, तो विनाश निश्चित है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी जब जब अपनी लक्ष्मण रेखा लांघती है तो सामाजिकता, मानवीयता, आत्मीयता और राष्ट्रीयता के स्तंभों को जड़ से हिला देती है। साथियों, अभिव्यक्ति की यह आजादी एक परम वीर की उस खड़क के समान है जिसमें समस्त सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का बल तो है ही, परंतु जिसकी धार इतनी प्रबल है कि कभी कभी समाज में ही दरार डालने का कार्य कर देती है। इसकी इस धार का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि जब स्वयं ईश्वर भी इसके समक्ष आ गए तो मां सीता को महल से निकालने पर भगवान श्री राम और महाभारत में श्री कृष्ण की कूटनीतियों को भी गलत ठहरा दिया। आज समय की प्रगति के साथ संविधान का सुरक्षा कवच, उसमें एक मौलिक अधिकार व उसके तय युक्तियुक्त निर्बंधन होने के बावजूद मुझे तब अभिव्यक्ति की आजादी अपनी चिता पर लेटी हुई दिखाई देती है जब जब इसका प्रयोग हमारी भारतीय सेना की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। अरे लक्ष्मण रेखा से बहुत दूर नजर आती है जब कभी हमारे भारत देश में ऐसे नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर आजाद करा के रहेंगे,
अभिव्यक्ति की आजादी उस समय तार तार हो जाती है जब किसी अभिनेता को भारत की भूमि में सुरक्षित महसूस नहीं होता, जब कभी दुर्भाग्यवश मेरे कानों में किसी आतंकवादी के समर्थन में या सुनने में आता है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इतना ही नहीं साथियों, आज मीडिया डिबेट जैसी कई जगहों पर रोजाना लक्ष्मण रेखा लांघकर अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल हो रहा है। संविधान, सत्ता, समाज तीनों इस समस्या के सामने लाचार हैं। संविधान अपनी मर्यादा के कारण, सत्ता अपने स्वार्थ के कारण और समाज अपनी अज्ञानता के कारण इसके आगे लक्ष्मण रेखा नहीं खींच पा रही। क्योंकि क्या भ्रमित, गुमराह, जाति व धर्म में बटा समाज इतना सामर्थ्य रखता है? परंतु जब मैं स्मरण करता हूं विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम जैसे उस भारतीय समाज को, जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, अरे जहां की माटी ही चंदन है, जहां से स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों ने समूचे संसार को मानवीयता और मर्यादा का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसके समक्ष सारे पुरस्कार बौने हैं, तो महसूस कर पाता हूं मेरे भारत का वह असीम बल जिससे इस बार लक्ष्मण रेखा सीता की कुटी के बाहर नहीं अपितु रावण के किले के बाहर बनाई जाएगी। क्योंकि विचार मानसिकता के अधीन होते हैं और अभिव्यक्ति विचारों के अधीन। हमें केवल अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अगली कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि है तमन्ना कि इस देश को मैं बादलों में बसा दूं, एक बार पुनः सभी को आजादी के पंख लगा दूं। मुझे अपने रक्त से ही क्यों ना खींचनी पड़े, मुझे अपने रक्त से ही क्यों ना खींचनी पड़े, पर इस देश के समक्ष हर बुराई के आगे एक लक्ष्मण रेखा बना दूं, एक लक्ष्मण रेखा बना दूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Mr. Pratap. I request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karaj sir to congratulate Mr. Pratap and felicitate him. Let's give a huge round of applause to Pratap Raj Tiwari. Now I would invite our next student leader, Ms. Nandini Ravishankar, to put her views in front of us. கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு. Hailing from Tamil Nadu, the literal translation of this is whatever we have learnt in law is something which is extremely handful, and what is yet to be learnt is a lot more. Fali Nariman, the greatest of the Indian jurists of India, once said, if at all any constitutional amendment has to be done to the core values of the Indian Constitution, the lowest ebb of intolerance that persists in our country with respect to freedom of speech and expression has to be looked into. Very warm greetings to one and all present here. I, Nandini Ravishankar, a student of BBA LLB Honours, takes this privilege to speak on the topic, freedom of speech and expression, where is the Lakshman Rekha? Every one of us knows about Article 19, which talks about freedom of speech and expression. But often, why is this necessity of Lakshman Rekha? It is because it's often taken for granted. Article, especially talking about sedition, says that only those words specifically mentioned in the Kedarnath judgment that evoke a public disorder or a chaos against the country and the government established by law will deserve punishment. But if you see the Umar Khalid judgment of Jawaharlal Nehru University, where the person against a revered personality spoke few controversial statements, he was definitely put behind bars. We saw journalists last year like Nikita and Natasha Narwal who were put behind bars, incarcerated under Unlawful Activities Prevention Act. I, as a law student, often think, why is constructive criticism somewhere not accepted optimistically? It's a privilege to actually mention Chief Justice of India, former Chief Justice, N.V. Ramana, to talk about the colonial era law of sedition to be abolished. And as our revered leader, Sri Rahul V. Karad, always talks about,
breaking the colonialization, this is the law that we require. Somewhere, media trials often take to the podium to talk about things that are still sub judice in the court. The court abides by the principle of innocent until proven guilty, but not otherwise. Principles of natural justice and definitely the staunch support as well as the trust that people of India vest in the Indian judiciary is where we have to put our Lakshman Rekha. And hence, if Bharat has to be a Vishwa Guru, we have to handle this extremely precariously and know where our limits are for a better tomorrow. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Nandini. I request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karat sir to congratulate Nandini. Give her a huge round of applause, my friends. Now, I would request our next student leader, Mr. Sudhanshu Dahake from Madhya Pradesh again to put forward his views. Give a huge round of applause, my friends. मराठी माती महाराष्ट्राला नतमस्तक करतोय. इथे उपस्थित मंचासीन सगळे महानुभाव आणि माझ्या समोर बसलेले भविष्याचे भारताचं भविष्य सगळ्याला माझा आभाळभर नमस्कार. भारत की अखंडता का ही विनाश कर चर्चाओं में है वो, संविधान से उनका नाता सगा. ऐसा लगता है क्या, अरे बोलेंगे और करेंगे शर्मिंदा हो लोकतंत्र को. आखिर साहब बोलने का पैसा लगता है क्या. हाँ, मैं बात कर रहा हूं कई राजनेताओं के धर्म विरोधी बयान की. बात करता हूं कंगना रनौत की, जो अपने आप की तुलना वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से करती है और शहादतों भरी आजादी को भीख बताती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा है लक्ष्मण रेखा विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र असंभव है. विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है. ये आजादी, ये स्वतंत्रता एक नवजात शिशु को भी उतनी है जितने एक निजी संस्थान में कार्यरत किसी अफसर की. ये आजादी, ये स्वतंत्रता किसी गांव के गरीब पुरुष की भी उतनी है जितनी इस देश के सम्माननीय प्रधान पुरुष की. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही परिणाम है जो हम अपने अधिकारों को लेकर सरकारों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. वो चाहे अनुच्छेद 370 हो या 3 तलाक, सीए, एनपीए हो या एनआरसी, किसान आंदोलन हो या अग्निवीर जैसी कई बड़ी योजनाएं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोटे बड़े हमले और प्रतिबंधों को झेलते हमारे लोकतंत्र ने कई दशक पार किए. परंतु पिछले 1 दशक से, खासकर जब से सोशल मीडिया की ताकत आम जन को मिली है, इस पर खतरा और अधिक बढ़ गया है. आज ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं. मुझे तो नागार्जुन की वो बात याद आती है. उन्होंने कहा था, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के. गांधी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. परंतु आज हमारा भारतीय समाज बुरा देख रहा है, बुरा सुन रहा है और इस स्वतंत्रता की आड़ में बुरा बोल रहा है. कितनी विडंबना की बात है कि हम उस गांधी को गलत कहते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो और दांडी यात्रा जैसे कई बड़े बड़े आंदोलन किए. माफ कीजिएगा, ये आजादी तो गलत लगती है जब हम एक तरफ महाराष्ट्र की शान राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने की बात करते हैं, जिनके नौसेना की कमान सिद्धि संबल के हाथों में थी, जिनके तोपखाने की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी, जिनके गुप्तचार मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे. परंतु दूसरी तरफ विडंबना है कि हम उनके विचारों का उल्लंघन कर इस स्वतंत्रता की आड़ में एक दूसरे के धर्म मजहब को निशाना बनाकर अब शब्दों से नवाजते हैं. हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार अनुच्छेद 19A के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सभी अधिकार दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार 19(2) में उन्हें सीमाओं में भी बांधा गया है. अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि मत करो मां भारती को कहने के लिए मजबूर कि मेरी मिट्टी पर झूठा अपनत्व है. अरे मत करो मां भारती को कहने के लिए मजबूर कि मेरी मिट्टी पर झूठा अपनत्व है. यदि रखनी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलों में जिंदा, तो एक लक्ष्मण रेखा का भी बड़ा महत्व है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश. Thank you so much. I would request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karat sir
to felicitate Mr. Sudhanshu Dahake. Heartiest congratulations, Mr. Sudhanshu. Now, may I please invite our last student speaker of the session, Ms. Akshita Mansi Madhav Deshpande from Maharashtra. आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं अक्षता मानसी माधव देशपांडे कुंभ क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से मंचस्थ मान्यवर एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति का मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र में स्वागत करती हूँ। आज मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लक्ष्मण रेखा का इस विषय पर अपने विचार रखने आई हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। ये विचार तो अमर्याद है, ये विचार मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसेस के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों ने ही अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो हमारे लिए केवल अधिकार नहीं, अपितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। परंतु आज के इस युग में हमें यह समझना आवश्यक हो गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सत्य से विद्रोह नहीं। जहां स्वतंत्र पूर्व भारत में हमारे पत्रकारों ने अपनी कलम की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया, वहीं आज के इस समय में हमारे वही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। केरला हाई कोर्ट के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट लाइसेंस टू अब्यूज जस्टिस सिस्टम विथ योर हाफ बेक्ड फैक्ट्स एंड लिटिल नॉलेज अबाउट जुडिशियरी। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो गत 7 वर्षों में अभिव्यक्ति के नाम पर देश में हिंसा का प्रसार 500% से बढ़ गया है। मित्रों, हमें रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच का अंतर समझना होगा। We need to understand that freedom of speech comes with responsibility. हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, पर उसकी लक्ष्मण रेखा का है, क्योंकि मर्यादा से परे स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो हमारा ये भारतवर्ष शालीनता, सभ्यता तथा नैतिकता का प्रतीक है। इसी नैतिकता के आधार पर हम सभी भारतीयों को अपने विचारों के प्रकाशन से पूर्व परीक्षण की आवश्यकता है। आज समाज की वो धूर्त विचारधारा जो अभिव्यक्ति की लहराती पताका को धर्म ध्वजा बताकर उसके आड़ में दुष्प्रचार कर रही है, ऐसे प्रवाह से न केवल हमारे भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा। हम सब इस देश के युवा हैं। यह ब्रह्मांड और चीजें सिर्फ सोच सकता है, वो हम कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी स्वनिर्धार के साथ हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा और भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का रक्षण करना होगा। चलो, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, पर उसे निभाना और भी कठिन है। अरे विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, पर उसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। जय हिंद, जय मां भारती। Thank you, Ms. Akshita. I shall request Honorable Executive President Shri Rahul Ji Karaj sir to felicitate our last student speaker. Give a huge round of applause for Akshita, my friends. Ladies and gentlemen, I think that should go for a huge round of applause once again for all our student leaders. The zeal and enthusiasm with which they spoke reaffirms our belief that our nation is indeed in safe hands, our future nation is indeed in safe hands. Ladies and gentlemen, today we have the honor and privilege to have amongst us Shri Satish Mahanaji, the Honorable Chairman of the session. He is the Honorable Speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly. Before requesting Sir to address the gathering, may I please request the technical team to relay a short video on the life and work of Shri Satish Mahanaji. Over to my technical team. Shri Satish Mahana is a member and incumbent Speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly.
He has served since the 11th Legislative Assembly and is currently representing Maharajpur constituency of Kanpur. He did his early schooling from St. Joseph's Senior Secondary School and attended the Kanpur University to obtain a Bachelor of Science degree. He participated in the 2009 general elections as a BJP candidate from Kanpur and served as the vice leader of Bharatiya Chhatra Party in the 16th Vidhan Sabha of Uttar Pradesh. Shri Satish Mahana is also a former coordinator of Bajrang Dal, the youth wing of Vishwa Hindu Parishad. Shri Mahana has been MLA for 8 straight terms. He served as Minister of State for Housing and Urban Development from 1997 to 2002. After 2012, he has been representing Maharajpur Assembly, constituency of Kanpur Nagar district of Uttar Pradesh. In 2017, Shri Mahana was appointed as a Minister of Industrial Development in the Uttar Pradesh government. We warmly welcome Shri Satish Mahana. With a huge round of applause, my friends, let us all welcome Shri Satish Mahana ji, Honorable Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly. Over to you, sir. Thank you very much. I am privileged to be here on this dais. The Bharatiya Chhatra Sansad being organized by MIT, Pune. I am honored to share this dais with the very important dignitaries from across the country. I am happy that Managing Director of MIT, Shri Rahul V. Karad, he has been organizing these seminars for last more than 11 years now. It is the 12th one, I suppose. So when I came to know about MIT after being elected as Speaker of the Assembly, I was very eager to join this. Because most of the times when we are in politics, the perception of the politicians is not very good in the society. People think that those who have been elected by electoral system, पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे खराब काम है जो वो लोग करते हैं. लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमारे जो यूथ हैं, उनको आज की राजनीति के बारे में बताने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए MIT यूनिवर्सिटी ने एक महत्वपूर्ण पहल करी. इस बात को मैं यहाँ पर MIT के इस महत्वपूर्ण सेशन के ऊपर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे नौजवान छात्रों ने यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, वे टू ड्रॉ द लाइन के बारे में अपने 3-3 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावी विचार रखे. ये केवल भाषण में नहीं, जीवन में व्यक्ति को उतारने की आवश्यकता है. जिस समय हम चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी योग्यता के अनुरूप पहचानना नहीं चाहते और चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में हम विपरीत बातचीत करते हैं, जैसे कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी कहने की किसी को भी छूट हो सकती है, तो मैं इनडायरेक्टली जो हमारे देश के मतदाता हैं, जो देश की बहुसंख्यक मतदाता हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो डिजर्व नहीं करते. तो महत्वपूर्ण काम जो MIT को करना है कि एक समाज में इस परसेप्शन को चेंज करने का प्रयास करना है कि नहीं, समाज में अच्छे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं. वी हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. सम इंडिविजुअल्स कैन बी गुड और बैड, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का हमेशा सम्मान होना चाहिए. और जिस समय इंस्टीट्यूशंस के सम्मान की बात करता हूं
तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है जो हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं इस बात को कहूं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो ये कोई अभी हमारे संविधान ने आज़ादी के बाद ये हमारे को दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आर्टिकल 19 हमारे को इस बात की छूट देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने रख सकते हैं। लेकिन जब से सिविलाइजेशन हुआ, समय समय के हिसाब से हिस्ट्री में भी हम इस बात को जानकारी रखते हैं कि अपनी बात कहने का अधिकार देने का प्रयास इस सभ्यता के उद्भव भाव से शुरू हुआ। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो वहां पर भी स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की। कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी इस ओर हमारे को ध्यान दिलाता है। अगर हम उस दौर की बात करते हैं तो जो सभाएं होती थी, सभा का मतलब सभ्य लोगों के बीच की बात करना। आज जिस समय हम सभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर सभ्य तरीके से बातचीत होगी। सभ्य लोग, पार्लियामेंट्री एंड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस के ऊपर भी हम उसके दो डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ पार्लियामेंट्री और ये चीज़ अनपार्लियामेंट्री है। तो हमारी बहुत अच्छी बात हमारे एक नौजवान स्पीकर ने यहाँ पर कही कि हमारे को अपने आप से इस बात के लिए तय करना पड़ेगा कि वे टू ड्रॉ द लाइन। केवल आर्टिकल 19 ही ऐसा है जो सिर्फ हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं देता, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि आप इन विषयों के ऊपर आपकी जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की वो नहीं है, जो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो ये हमारे को बहुत गंभीरता के साथ सोचना है। ये जो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, ये इसलिए क्योंकि एक मनुष्य है जो संवेदनशील है, सोशल प्राणी है, और जिस समय सोशल सिस्टम के अंतर्गत हम रहते हैं तो हमारे को मर्यादाओं के अंतर्गत बंधे रहने का एक स्वभाव होना चाहिए। हम जिस समय मर्यादा लांघने की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के उस अवधारणाओं को लांघने की बात करते हैं जहां पर हमारे को एक रेखा खींचने की आवश्यकता है। जिस समय संविधान के निर्माता परम पूज्य अम्बेडकर साहब ने संविधान की संरचना करी होगी तो उन्होंने अपनी एक बात में कहा था, उन्होंने कहा संविधान में क्या लिखा है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम इज विद इन द माइंड ऑफ मैन। उसकी माइंड सेट व्यक्ति का क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम वहां पर खड़ी होती है। और आज अपनी सुप्रीमेसी को जाहिर करने के लिए हम उस रेखा को लांघने में कोई संकोच नहीं करते, और उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार करते हैं। हरवंश राय बच्चन जी ने बहुत 2 लाइनें लिखी थी। उन्होंने कहा कि किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। जिसको जितनी जरूरत है उतना हमारे को पहचान रहा है। उसको लगता है कि इनकी आलोचना करने में हमारा भला होने वाला है तो हमारी आलोचना कर रहा है, किसी को लग रहा है कि हमारी बढ़ाई करने के लिए उसका भला होने वाला है तो हमारी बढ़ाई। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति ने दूसरे का असेसमेंट करना प्रारंभ कर दिया कि अच्छा है कि खराब है, अपनी जरूरत के हिसाब से उसने करना। जिसे हम बहुत बड़े पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत इसको देखते हैं, राष्ट्र हित में देखते हैं, और केवल राष्ट्र हित की बात नहीं करना चाहता। राष्ट्र हित में व्यक्तिगत जीवन में हम जहां कहीं भी संवाद बनाते हैं, हर स्थान के ऊपर वाणी की और भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एक वाणी है, एक जुबान है जो आपको किसी के साथ मोहब्बत भी करा सकती है, और एक वाणी और एक जुबान है जो आपकी भाषा है वो किसी के साथ आपकी दुश्मनी भी करा सकती है। तो इस बात को बहुत गंभीरता के साथ देखने की आवश्यकता है कि हमारे को किस लिमिट तक बोलने की आवश्यकता है। आज हम अपने कन्वीनियंस के ऊपर, मैंने कहा कि हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मीडिया की जो आजकल इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, विशेष रूप से सोशल मीडिया की, यहां पर हमारे नौजवान छात्र जो यहां से निकलकर प्रदेश, देश और दुनिया का नेतृत्व करेंगे, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ज्यादा है।
कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर कमेंट करने वाले या उसके ऊपर अपने ओपिनियन देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कोई एक चीज नेगेटिव जिस समय आ जाती है तो उसके ऊपर बाढ़ लग जाती है लोगों को कमेंट करने की। यही सबसे खराब है। खराब बात को देखने के लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं क्योंकि वो आसानी से की जाती है। अच्छा काम मुश्किल से किया जा सकता है। हमारे एक मित्र भी यहाँ पर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे को उस लिमिट तक पहुंचना है लेकिन मुश्किल है। ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचने के लिए मुश्किल रास्तों से ही जाना पड़ेगा। भीड़ में चलने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। मैं इस बात को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जो अपना रास्ता स्वयं बनाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। भीड़ में चलने वाला कभी अपना रास्ता अलग नहीं बना सकता। आपको अलग अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। अलग जो राष्ट्र हित में हो, अलग जो समाज हित में हो, अलग जो आपके व्यक्तिगत हित में भी हो। और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर आज हम सब लोगों को इस बात के लिए सोचने की आवश्यकता है। मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें आप जब परिवार में बैठे हो, इट इज नॉट ऑलवेज व्हेन यू वांट टू प्रूव दैट यू कैन स्पीक समथिंग, समटाइम्स साइलेंस इज आल्सो मोर इंपॉर्टेंट। आप चुप रहकर भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं और चुप रहकर अपनी बात कहने का जो उसमें कला आ जाएगा वो उन सीमाओं को समझ जाएगा, उस लाइन को समझ जाएगा जिसको को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से शब्दों के अंतर्गत कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो। पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि क्या बोलना है। इस बात को जब आप विचार कर कर बोलोगे तो ये कहते हैं ना कि यूज योर रीजंस फर्स्ट। पहले आप अपने रीजन करिए, किस रीजन के कारण बोले, क्यों आप बोल रहे हैं, बिफोर यू यूज योर टंग। पहले उन रीजंस को ढूंढो कि किस रीजंस के कारण आप बोले। जबान का इस्तेमाल करने से पहले जिस समय आप इस बात के ऊपर विचार करोगे तो आपको वो लक्ष्मण रेखा याद आ जाएगी जिसको लांघने से आप अपना और समाज का नुकसान कर सकते। इस बात को बहुत विस्तार तरीके से इसके ऊपर जितना भी मैंने कहा जाए कभी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो विधानसभा में 4 महीने पहले अध्यक्ष के पद के ऊपर चुना गया था, मैं 2 मिनट उसके बारे में भी चर्चा करूंगा क्योंकि समय की सीमा है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। कौन व्यक्ति कितना साहसी है और कौन व्यक्ति कितना दुस्साहसी है, इस पे फर्क होना चाहिए। फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुण नहीं तो नीम भी नरस में होना चाहिए। और गुण नहीं हो सकती तो नीम भी तो कम से कम ना हो। कड़वी भी बात तो मत कहिए। गुण नहीं तो नीम भी नरस में होना चाहिए। कब, कहां, कैसे, किसे, क्या कहना है। कब, कहां, कैसे, किसे, क्या कहना है। आपको ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। कम से कम आपके अंतस में, अंतरात्मा में इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसको कहां, कब, क्या और क्यों कहना है। और इस बात के ऊपर जिस समय हम विचार करेंगे तो ये जो मूल अवधारणा है डेमोक्रेसी की, जो हमारे को फ्रीडम हमारे संविधान ने दिया, पूरी दुनिया के अंतर्गत हम देखते हैं। जहां पर भी आज 15 तारीख 15 वर्ल्ड फ्रीडम डे भी इसी के आसपास मनाया जाता है। तो दुनिया को आजादी चाहिए। आजादी के लिए नारा लगाना बहुत चीज आसान है, लेकिन आजादी किस प्रकार की चाहिए। अगर हमारा देश आजाद हुआ तो देश के दीवानों ने, जिन्होंने आजादी के लिए ये जानते हुए कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन्होंने एक आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की होगी। उस कल्पना को हमारे संविधान में लिपिबद्ध किया गया, जिसके अनुसार हमारे को काम करना चाहिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष 28 अप्रैल निर्वाचित हुआ था। तो मेरा यह प्रयास रहता है कि विधानसभा में भी आपसी डिस्कशन हो, डिबेट्स हो। विधानसभा में पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं इस बात को यहां पर कहते हुए गर्व होता है, आई हैव 18 डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिकल फैकल्टी। 200 मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं मेरे पास, 18। मेरे पास 32
ऐसे लोग हैं जो MBA हैं, MTech हैं, BTech हैं, MCA, हमारे पास 32 ऐसे इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, हमारे पास 67 लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास 52 मेंबर्स हैं जो 40 साल से कम हैं, हमारे पास 47 विमेन MLAs हैं। मैंने सबको अलग अलग ग्रुप बनाकर उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया। मैं यहाँ पर नौजवान दोस्तों से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूँगा कि आपको, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स खराब इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं। पॉलिटिक्स को लोग खराब इसलिए कहते हैं कि आप जैसे लोग उसमें आगे नहीं आना चाहते। आपको आगे आना पड़ेगा अगर राजनीति को एक नई दिशा और नई दशा देने का काम करें, आपको आगे आना पड़ेगा। आप जिस समय आगे आओगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की असेंबली के बारे में जो एक नेगेटिव परसेप्शन था, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, पूरे देश के बारे में चेंज करना चाहते हैं। और वो चेंज करने की शुरुआत जहाँ से हो सकती है वो MIT पुणे से हो सकती है, मुझे इस बात का विश्वास है। वो यहाँ से उसको शुरुआत करने की आवश्यकता। लोग आए, बताएं, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हम लोगों ने लगना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस समय इस अमृत महोत्सव की बात करी, इस देश के 75वें आज़ादी के महोत्सव की बात करी, उन्होंने कहा अगले आने वाले 25 वर्ष अमृत काल हैं। 75 वर्षों से आज जो हम मना रहे हैं 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ, जिस समय हम 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे, शताब्दी वर्षगांठ बनाएंगे, तो उस समय हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, ये तय करने की जिम्मेवारी मेरे सामने बैठे हुए यहाँ पर नौजवान साथियों की है कि सेंचुरी के बाद जिस समय 100 साल आज़ादी के होंगे, हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा। ये आप सब लोगों ने इस काम करने की आवश्यकता, आप सब लोग काम करें। जिस समय देश आज़ाद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि उस समय हमारे नौजवानों की पसीने की खुशबू उसमें आनी चाहिए कि आप इतना मेहनत आपको करना। अगले आने वाले 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। हर नौजवान को इस ओर आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना, और उनको आगे की दिशा दिखाने का काम हमारे मित्र भाई राहुल करात साहब करेंगे। मुझे इस बात का विश्वास करेंगे। आपको दिशा देने का काम, दिखाने का काम तो ये करेंगे, लेकिन आगे हमारे को स्वयं बढ़ना पड़ेगा। और जिस समय हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया था, मैं भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का बहुत एक्टिव मेंबर था और हूं भी। दुनिया की जिस समय लेजिस्लेशन की बात करें, दुनिया में जिस समय डेमोक्रेसी की बात करें, तो हमारे जैसी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारे को इस बात को बनाकर रखना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाकर ले जाना पड़ेगा। आज इस अवसर के ऊपर मैं विगत since 1991 I contested first time for assembly polls in 1991। अभी मैं बैक टू बैक 8 बार जीता हूँ। ये भी बात मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा कि मैं 8 बार जीता हूँ, वो इन्होंने दिखा दिया अपने मेरे जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसके ऊपर दे हैव टूल्ड। और 8 बार जीतने का कारण मेरे द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया काम तो होगा ही। मैं सिर्फ नहीं कह रहा इट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग विच मेड मी विन 8 टाइम्स, लेकिन 8 बार जीतने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वे टू ड्रॉ द लाइन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको कहाँ पर क्या बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है, इस बात को सीखने का प्रयास मैंने 32 वर्षों के राजनीति में किया है। तो जिस समय हमारे नौजवान साथी सार्वजनिक राजनीति में जाएंगे, उस समय उनको कब, कहाँ, कैसे और क्यों बोलना है, जिस समय इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारे मित्र यहाँ पर आदरणीय कार्तिकेयन साहब बैठे हुए हैं, जो बहुत प्रोमिनेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, हमारे उड़ीसा के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सारे लोग जो इस टायर्स के ऊपर बैठे हैं, सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। लेकिन मार्गदर्शन लेने के बाद हमारे को समाज में उसके बदलाव में हम कितना वाहक बन सकेंगे, हाउ मच डू वी कैरी फ्रॉम दिस सेशन फॉर ऑल दीज 3 days, आज से शुरू होकर जो परसों तक चलेगा, हम यहाँ से क्या ले जा सकते हैं, उस रोशनी को कितना फैला सकते हैं समाज में, जिसके कारण एक लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बने और लोकतंत्र में बैठे हुए हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास बने। और जिस समय नेतृत्व के प्रति विश्वास बनेगा, उस समय हम निश्चित रूप से हम नए भारत की उस नई रोशनी को, जो इस देश की 100वीं आज़ादी के समय में हम कल्पना करते हैं, हम उसको देख सकेंगे। मैं एक बार फिर भाई राहुल जी को, उनके पूज्य पिताजी को, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री विश्वनाथ जी को मुझे
उनके दर्शन करने का अवसर मिला है वहाँ पर। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार करता हूँ और भाई विश्वनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर के ऊपर मुझे यहाँ पर आने का एक अवसर दिया उन्होंने, तो मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश विधानसभा के श्री प्रदीप दुबे जी हैं, हमारे यंग एमएलए डॉक्टर रागिनी भी हैं, जो दे हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ टू पुणे फॉर दिस फंक्शन ओनली, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए जो इसमें सहयोग किया है, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर एमआईटी इंस्टीट्यूशंस के सभी बंधुओं को जो इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, ऑनरेबल स्पीकर सर को, इफ यू कैन राइज एंड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। ही इज वन सच टॉल लीडर, 8 times he became MLA, last 42 years. He is in his public life consistently, 4 decades, 40 years in Uttar Pradesh Assembly. One of the most veteran, qualified, competent leader, and I think he expressed his innocence at this age also, what he expressed. That is the one very important thing, what at least for me, I liked, along with the governance and other issues, what he said. Please give once again a big round of applause to respected. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. It is said that don't work for recognition, but do work worthy of recognition. When a person works for others with full dedication and zeal, they hold a special place in our heart, a place of love, honor, and respect. Ladies and gentlemen, we have come to a very special moment at the 12th edition of the Bharatiya Chhatra Sansad, wherein we shall confer the award of Adarsh Yuva Vidhayak Samman, the Ideal Youth MLA honor, for the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy. The award shall be conferred to Shri Tushar Kanti Behra ji. May I please request our Honorable Executive President, Shri Rahul V. Karat sir, and the Honorable Chairman of the session, Shri Satish Mahana ji, to felicitate Shri Tushar Kanti Behra ji. With a big round of applause, my friends, let us all witness this moment where the Adarsh Yuva Vidhayak Samman Award is being conferred upon Shri Tushar Kanti Behra ji, Honorable Minister of State for Home Affairs, E&IT, Sports and Youth Services, Government of Orissa. Let not the applause stop, my dear friends. It's a historic moment that we are witnessing. Now may I please request sir to address our student leaders. As you, all of you may not be aware, but some of the previous BCS participants, that annually for the promotion of good governance, democracy, leadership, we confer an award on once, such unique MLAs in the country who are qualified, competent, their ethical standards, their overall perception in the society. So he is a IIT graduate and most qualified, committed, honest, first generation leader. Let us give him a big round of applause, and he is expressing his mind. And यही करना है कि आप सब लोग qualified MIT, WPU के, BTech के, MBA के सभी students public life में आके अच्छे law maker बने और समाज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करे, इस अपेक्षा से ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। मैं ऑनरेबल मंत्री जी को, जो बेसिकली मंत्री बनना है तो बेसिक क्वालिफिकेशन इज एमएलए शिप, सो ही इज एमएलए, सो दैट इज अ वेरी इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रेट वर्क ही हैज डन. प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ. थैंक यू सो मच राहुल जी. ऑनरेबल स्पीकर of Legislative Assembly Uttar Pradesh, Sri Satish Mahana ji, all the distinguished guests on the dais, all the students, faculties and friends from media. At the outset,
I would like to thank Bharatiya Chhatra Sansad, MIT World Peace University for conferring this award upon me. I also dedicate this award to all the people of my constituency, that is Kakatpur in Puri district of Odisha, also all the people of Odisha. I would say just 2 words on the Article 21 of Constitution of India. In my opinion, there is no particular line which we can draw just because of protecting our freedom of speech or freedom of expression or liberty. It is subjective, it is contextual, because that differs from person to person. But in legal ambit, I just can say, if we go by the theory of Jeremy Bentham's utilitarianism, then anything we say or express or do that should not hamper the harmony of society or that shouldn't break the social fabric. That I must say that everything should be done in a restricted manner, but that line again is contextual or subjective. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. That should go for a huge round of applause, my friends. His words are indeed inspiring for all our future leaders. Ladies and gentlemen, there are some moments in our life that we wish to treasure throughout. And this being such a moment, we'll just not let it pass by. May I please request all the dignitaries and the student leaders on the dais to please rise in your seats for a group photograph. A moment, a memory that will be etched forever. May I please request all of you to rise in your seats for the group photograph. It's indeed a sight to behold, my friends. Such a memory that will be etched forever in our minds. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे. Thank you so much. Now, my friends, may I please invite our next eminent speaker, who is the Joint Secretary of All India Congress Committee and National In Charge of Indian Youth Congress, Mr. Advocate Krishna Allavaruji. But first, I would like to request the technical team to relay a short video on the life and work of Sri Krishna. As the Joint Secretary of the Indian National Congress and the head of the Indian Youth Congress, Advocate Sri Krishna Allavru is an influential figure. A lawyer by profession, Advocate Sri Krishna Allavru has a history in student politics, dating back to his time at the University of Delhi. Young people, in his opinion, are the driving force behind societal and political change. He leads Indian Youth Congress on all fronts, whether it be in taking on the government over any issue or launching outreach initiatives in various regions of the nation. Sri Krishna Allavru, a Georgetown University LLM graduate, lends Indian Youth Congress his logical mind and identifies structural gaps in the policies of the Modi government. He shares the responsibility of drawing the roadmap for the Indian Youth Congress. We warmly welcome Advocate Sri Krishna Allavru. Give him a huge round of applause, my friends. सबको नमस्कार, स्वागत और धन्यवाद. Good afternoon, welcome and thank you. भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। सो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश या मैं हिंदी में बात कर सकता हूं, जो भी आप चाहें, वट एवर यू प्रिफर। Okay. On popular demand, Hindi? Okay. सबकी इच्छा के अनुसार मैंने अपनी बात भारत माता की जय से शुरू की और आप सब ने इस नारा में दिल और दिमाग के साथ मेरा साथ दिया। हम सब की भावना एक ही है और वो है कि भारत माता को विश्व के सबसे बेहतरीन देश बनाना है। मेरे से पहले आपके दोस्तों ने कुछ बातें रखी। यूपी के ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कुछ बातें रखी, उड़ीसा के हमारे मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी। आज का जो टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, इस पे आने से पहले मैं इस विषय को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में इस विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। दुनिया में अगर हम इतिहास खोल के देखें तो इतिहास के सबसे बड़े आइडिया और इवेंट कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच से ताल्लुकात रखते हैं। देश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं तो एक दो उदाहरण के साथ मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की भूमिका आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जमाना था जब ब्रिटेन पिछड़ा देश हुआ करता था, मगर ब्रिटेन में आइडियाज की आदान प्रदान आसानी से होने के कारण ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उस औद्योगिक रेवोल्यूशन के कारण कुछ सालों में ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया था। हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुका था और यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज नहीं डूबता। एक पिछड़े देश से ऐसा साम्राज्य बनाने में ब्रिटेन में ऐसी क्या हालतें थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ ब्रिटिश में क्यों पैदा हुआ और किसी देश में क्यों नहीं।
इसका एक कारण बताया जाता है कि ब्रिटिश राज्य पिछड़ा था, मगर वहां आधुनिक इंडस्ट्री की सोच को आसानी से जगह दी गई थी। बाकी जगह इतनी आसानी से नए आइडिया, नए विचार, नए सोच को जगह नहीं मिली। आज दुनिया का नंबर 1 देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माना जाता है। इत्तेफाक से वो भी एक लोकतंत्र है और वहां पर भी यूएसए को नंबर 1 बनने में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ताकत हो, चाहे उनकी विश्वविद्यालय की क्वालिटी की बात हो, इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण वहां पर बोलने की, सोचने की, विचारों की, नई आइडियाज की आजादी बताया जाता है। आप दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस लीजिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन लीजिए, इलॉन मस्क, टेस्ला, स्टीव जॉब्स, एप्पल, जेफ बीजोस, अमेज़न, इन सब का सक्सेस के पीछे कारण वहां का सोच विचार की आजादी, आदान प्रदान में आसानी बताई जाती है। क्या कारण है कि ये तीनों कंपनी चाइना में नहीं हो पाए? हो सकता है कि भविष्य में हो, लेकिन ये तीनों कंपनी के सक्सेस के पीछे का राज उन्होंने नए सोच, नए विचार, नए तकनीक, नए अंदाज से अपना काम करना सीखा। अब दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर की बात करें, स्टेट्समैन की बात करें, उनकी राजनीतिक जीवन, उनकी राजनीतिक सफलता कहीं न कहीं विचार सोच की आजादी के इर्द गिर्द बनी गई है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एब्राहम लिंकन, कहने का मतलब यह है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की पहले मान्यता को ठीक से समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी महत्वपूर्ण राइट के लिमिट करने से पहले कैसे करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कहां कहां पर करना चाहिए, हमें सोच विचार के करना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आंख में धूल गिरी है तो धूल के निकालने चक्कर में
हम कहीं आंख ही ना निकाल बैठे। सीमा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको कैसे हम सुरक्षित रखें, उसको कैसे हम मजबूत बनाएं, साथ साथ उसको कैसे हम बांध के रखें ताकि वो फायदा ज्यादा और नुकसान कम दे। इन तीनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित किससे रखनी चाहिए? सुरक्षित बोलने की आजादी को सुरक्षा किससे चाहिए? सुरक्षा ताकतवर शक्तियों से चाहिए जो अपनी ताकत को कायम रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। डीप स्टेट, बड़े बिजनेस, बड़े लीडर, कुछ राजनीतिक संस्था जो अपनी निजी फायदे के लिए आजादी का गला घोटना चाहेंगे, उनसे बचाने की जरूरत है। ताकतवर कैसे बनाने की जरूरत है? हां, हमारा संविधान हर किसी को बोलने की आजादी देता है, मगर हकीकत में जब आप देखोगे तो ये जो संवैधानिक अधिकार है वो लोगों को सामान्य तरीके से नहीं उपलब्ध है। शक्तिशाली को यह अधिकार शक्ति से प्रधान है, कमजोर को कमजोर अधिकार है। हमें इसे बदलना है। कमजोर की बोलने की आजादी को हमें शक्ति देने की जरूरत है। सीमा की बात, कोई भी गलत बोलता है, किसी को भी हानि पहुंचाता है, व्यक्ति हो या देश हो, बोलने की आजादी हमारे पर जिम्मेदारी डालती है। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम उसको टोकें, रोकें। कभी भी राष्ट्रहित को किसी के बोलने के वजह से हानि पहुंचती है तो वह कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हां, हमें बोलने की आजादी चाहिए, उसको ताकतवर बनाना है, उसको सुरक्षित रखना है, लेकिन साथ में उसको उस तरीके से बांधना है और उतना ही बांधना है जिससे हमें देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में शक्ति मिले। जय हिंद, जय भारत। A huge round of applause, my friends. Those were really amusing words, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for that beautiful address. My friends, since morning we have been discussing about how do we get rid of the mindset that we have been in for more than 150 years. Rahul Karat sir in his address also talked about breaking the colonial mindset and the various activities that we are doing to bring youth out of that mindset and entire country. सर ने उनके भाषण में बात भी की कि हम अभी भी अपने खुद के देश को इंडिया बुलाते हैं, क्यों नहीं हम अपने देश को भारत बुलाते? In the same context, we have prepared a small petition and we need your support to make this a national impact. I request my technical team to kindly relay the presentation. India or Bharat, Independence Day or National Day? The views of Shri Rahul Karad are very clear about this. Who were the Britishers to give us the independence? Every soul born is independent by itself. Why are we still calling Independence Day? Next, please.
75 years since we broke the shackles of colonialism, but we are still India, not Bharat. Next, please. India to Bharat, Independence Day to National Day. Be the change. We are now going to show you a QR code on the next slide, please. I request everyone sitting here, on the dais, off the dais, please take out your mobile phones, scan this QR code. Right away, we are going to wait for 60 seconds here. I request everyone on the dais, off the dais, please take out your mobile phones, scan this QR code. If it is not getting scanned, there is a link given. You can manually type this link in your browser, but this QR code should work. Simply go online, scan this QR code, it will take you to a link. There we have put up the petition. We request each one of you to go ahead and sign that petition right away. It takes hardly few seconds, but your few seconds can really change the fate of this country in time to come. I can see mobile phones going up in the sky and trying to scan the QR code, a very, very positive sign. So I request everyone once again, and not just that, I would like to request all of you to click a photograph also. Click a photograph, take it with you back home, show it to your family, friends, and just spread it as much as possible and appeal everyone that we must be known as Bharat and not India. We should not call Independence Day, but National Day. So support this petition, go online and do your best. Thank you. My friends, our country has a tradition of some of the great stalwarts. Our country was known for Vedic Gyan since unknown times. Today we have with us a very special personality, Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji, on whom we would be bestowing upon the Yuva Adhyatmik Guru Samman for outstanding contribution in spiritual renaissance of India and promotion of Vasudhaiva Kutumbakam philosophy. A renowned spiritual leader, orator of Srimad Bhagavad Katha and founder of Bhaktipat. Please put your hands together as we felicitate Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji. A very special Yuva Adhyatmik Guru Samman. A big round of applause, my friends. This has nothing to do with religion. The message that spread by Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji is all about how we should live our lives. I now request Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji to say a few words. Yeah. Thank you, Professor Gautam. This particular award we constituted 7 years before. The purpose was very simple, that in public life, so much we see. We all know that, and the very purpose of Bharatiya Chhatra Sansad. And Gokhale Sahab, Mahatma Gandhi ji, so many people said already that how to unify the Rajniti ka Adhyatmikaran and how to really coin the spirituality and the politics together. The what way long back Swami Vivekananda also said that unification of science and spirituality alone can bring peace to the mankind. And that became the mission of our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad sir. And with that purpose, we have bestowed this last 7 years, Honorable Chairman sir, these awards to some young leaders like Maharaj ji. And एक ऐसा भी एक नोशन है समाज के मन में कि आध्यात्म ये थोड़ा 50-55 के बाद जो है थोड़ा हाउस मौज मज़ा मस्ती करो और बाद में थोड़ा 50 के बाद आप सैफरन कलर पहनो या जो भी करना है करो. तो वो बात समझाने की एक छोटी सी कोशिश है ये अवार्ड के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो भी पूरे भारत से जितने भी अभी स्टूडेंट्स आए हैं इसमें सभी अलग अलग राज्यों से, और राजनीति में इसका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऑर्डर तैयार हो. जो आपके भी खुद के भाषण से सर बच्चों को एक अलग सा रूप आपने भी यहाँ पे दिया. 70 साल की आपकी उम्र में 40 साल तक राजनीति में रहकर भी जो इनोसेंस, जो प्यूरिटी आपके माइंड एंड हार्ट की यहाँ पे दिखी,
they are wise enough to understand and sense. So I request Maharaj Ji to speak his mind in front of this. There are technocrats, there are some other engineering and basic sciences students. You can express your mind that how it can be clubbed together. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया गया. भारतीय छात्र संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से आज युवा आध्यात्मिक गुरु सम्मान प्राप्त करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है. मंच पर विराजमान समस्त गणमान्य सदस्यजन, हमारे युवा भाई बंधु, हमारे यूपी के ऑनरेबल स्पीकर और आप सबके चहेते, और आज जिनको देख के मैं भी बहुत उनका एक प्रकार से मुरीद हो गया, हमारे राहुल जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ. और आप सब लोगों को अपने हृदय से बहुत बहुत प्रणाम. जय श्री कृष्ण, जय सिया राम. आज परम सौभाग्य मिला कि आप सबके मध्य में आने का अवसर मिला है. आज का टॉपिक जिस पर सारे हमारे युवा भाई बहनों ने भी अपने भाव प्रकट किए, गणमान्य अतिथियों ने भी अपने भाव प्रकट किए, मेरा भी मन का भाव था कि मैं कुछ कहूं यदि मुझे अनुमति प्राप्त होगी तो. और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अब आध्यात्मिक गुरु हूं तो फिर अपने भाव उसी रूप में ही प्रकट करूंगा, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा और जो भी कहूं उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा. जीवन में सुधरना कैसे है सब बताते हैं, जीवन में सद्मार्ग पर कैसे चलना है ये सब बताते हैं, लेकिन हम लोग बिगड़ किस वजह से जाते हैं ये कोई नहीं बताता. हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई सारे शास्त्र हैं, उनमें से एक है पंचतंत्र. और पंचतंत्र में बताते हैं कि यदि युवा संभलना चाहता है, युवा बचना चाहता है, युवा अपने पद से भ्रष्ट नहीं होना चाहता, तो उसको 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए. यहाँ जितने भी युवा हैं सब भविष्य हैं हमारे भारत का. मैं भी आप लोगों की तरह हूं, मैं भी भविष्य हूं. 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है. और वो 4 चीज कौन कौन सी हैं? यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिना, एकैकं प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्. 4 बात. सबसे पहला, युवावस्था, यहीं पर बिगड़ोगे, यहीं पर संभलोगे. दूसरी बात, युवावस्था में भी बहुत धनवान हो जाना. तीसरी बात, प्रभुत्व. प्रभुत्व मतलब बहुत अधिकार मिल जाना. युवावस्था का होना, धनवान होना और बहुत से अधिकार प्राप्त हो जाना, ये 3 चीज का साथ होना. और चौथी बात, अविवेक का होना, विवेक ना होना. ये 4 चीज जिसके अंदर हो जाती हैं वो अपने स्थिति से गिरेगा, उसका नाश निश्चित है. बल्कि पंचतंत्र तो कहता है इनमें से एक भी चीज है, और विवेक, सारे अधिकार हैं लेकिन विवेक नहीं है, तो आप निश्चित ही अपने पद से भ्रष्ट हो जाओगे.
नहीं। विवेक का मतलब क्या है? सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। अभी हमारे राहुल जी कह रहे थे कि एक सोच बन गई है कि आध्यात्मिक होना या कथाएं श्रवण करना, मंदिर जाना, ये सब 50 के बाद में हम लोग करते हैं। एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50-55 के बाद में की गई भक्ति या किया गया आध्यात्म ठीक उस प्रकार है जैसे घर में आग लग जाए और आप उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। जब तक कुआं खुदेगा, पानी का स्रोत आएगा, जल करके घर जल करके नाश हो जाएगा। इसलिए भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। आध्यात्म 55 का विषय नहीं, आध्यात्म बचपन का विषय। और उसमें भी आप लोग जिस जगह रहते हो, महाराष्ट्र, श्री ज्ञानदेव की भूमि, श्री नामदेव जी की भूमि, श्री तुकाराम जी की भूमि, सबने बाल अवस्था से ही आध्यात्म को जीवन में ला करके और जीवन की कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आध्यात्म एक औषधि की तरह है, उसको जीवन में लाइए, वो जीवन में ना जाने कितने प्रकार के पतन होने वाले स्थानों से आपको बचाएगा। इसलिए उसको जीवन में लाना बहुत जरूरी है। मैं भी एक बहुत छोटी अवस्था से कथाएं कर रहा हूं, परंतु जीवन में सदा एक प्रसन्नता, एक आनंद, एक खुशी का अनुभव करता हूं। इसलिए जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, आध्यात्म को अपने जीवन में एक स्थान दो। और मुझे बहुत खुशी है कि MIT यूनिवर्सिटी और हमारे राहुल जी, उनके पूज्य पिताजी, वे इस चीज पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आध्यात्म को साथ लेकर के युवाओं को उनके जो एम्स हैं उनकी ओर उनको अग्रसित किया जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया। अब समय कम है, सब लोगों को भी समय देना है, परंतु अपना भाव विराम दूं उससे पहले हमारे श्री नरसिंह मेहता जी एक बात कहते थे जिसको श्री गांधी जी ने कोट किया, और गांधी जी ने उसी बात को कहकर के विश्व में एक अलग जगाई। श्री नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो चीज आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती है वो किसी के साथ मत करो। यही आध्यात्म है, यही धर्म है। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार आपके श्री पंडरीनाथ भगवान के यहाँ का एक जय जयकार है, वो कर लीजिए। पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल। I'd like to invite retired IPS, former Director of Central Bureau of Investigation, former Director General of National Human Rights Commission, and former Special Director General of Central Reserve Police Force, Shri D.R. Karthikeyan ji. Sir will be enunciating about mantras for youth to tackle challenges of democracy and lead the life and the nation. But let's first see a short film about the life and work of Shri R.D. Karthikeyan ji. Shri D.R. Karthikeyan is a person of numerous hues. He rose from a humble farmer to become a human rights activist, a lawyer, senior police officer, proponent of interfaith harmony, and an environmentalist.
He held a number of high-ranking roles in the Indian government, including Special Director General of the Central Reserve Police Force, Director of the Central Bureau of Investigation, and Director General of the National Human Rights Commission. In addition to speaking at conferences on a variety of topics related to human welfare, including combating violence, crime and terrorism, and advancing the environment, human rights and interfaith harmony, he has travelled to various countries. He received the Padma Shri Award in 2010 in recognition of his meritorious efforts, which were acknowledged by the Indian government. Dr. Karthikeyan has also been awarded the Medal for Distinguished Service by the President of India. Additionally, he was recognized as an eminent personality of Karnataka state at a public event in Bangalore. He currently works with a number of groups that support environmental protection, clean and renewable energy, health for all, welfare of farmers and rural residents, and spirituality. He has edited and written numerous books and articles on a range of topics. We warmly welcome Dr. D.R. Karthikeyan. I kindly request you to address the gathering, sir. A huge round of applause for Shri D.R. Karthikeyan ji. Namaskar. Good afternoon, good evening, all the wonderful audience. My regards to the Honorable Chief Guest of the evening, eminent speakers, and dedicated faculty, and my young friends from all over the country. Let me first pay my gratitude and compliments to Dr. Vishwanath Kararji, Dr. Mashalkar, Dr. Rahul Karad, and their wonderful team for organizing this unique event, unparalleled. The arrangements have been perfect. The invitations have been extended well ahead of time. I wrote to Dr. Mashalkar, it's a unique organization. Already you are all in the leadership. Excel. Now the theme given to me is Mantras for Youth to tackle challenges of democracy and lead the life and the nation. The mantras are secret, devotion, dedication, hard work, patriotism, environment, leadership, and also the courage, power of independence. All of them are important to the youth for facing challenges to the individual, the family, the society, the planet Earth, and rule of law, human rights on many fronts. All that would take years and weeks together, hours and weeks together. So let me focus few minutes given to me on some aspects which in my opinion are the most important. The young lady Visakha and Kastub Yadav, who took care of me since my arrival, they said I should focus on values. And this at lunch break, Dr. Vishwanath Karad, the unique personality who created this institution, said she must share something about your personal life also. Okay, if that go, I can speak briefly about the value of courage, independence. You know, the assassination of Rajiv Gandhi took place on 21st May 1991. The government of India requested me to take up the investigation. I was in Hyderabad. At that time, those in Delhi declined to take up because it is hard to detect. And if you don't detect, you will be condemned as incompetent. If you detect, the deadly terrorist group will not allow you and the family to live. I accepted it as duty to the nation. At that time, it was considered impossible. It was destined to remain a mystery, like Kennedy assassination. When we took it up, we found it was the deadliest terrorist group at that time.
They killed their own president, defense minister, any number of police officers who took any case against them. But I detected the case, charge sheeted them. It's all part of history. I was very closely associated with Mr. T.N. Session, who has been also played a very important part in this institution of government. Then they asked me, you know, they have killed their own president. Hundreds of police officers, defense officers. Are you not scared? And also, you know, politics of this country. I said, no, I am not obliged to anybody and I don't fear death. Every born has to go one day. If in the part of doing your duty you get killed, it's all right. I said, no fear, courage, and also independence. I am not obliged to anybody. Till then, also in future. In fact, when Dr. Kalam offered me governorship, ambassadorship, I thanked him, no sir, I have done my duty. There is no compensation for that. So one more thing, I am going to focus on health of the body. For that also, I must tell you a story, an actual incident. It was about my meeting with Honorable Sri Narendra Modi ji when he was Chief Minister of Gujarat. 20th June 2013, I met him at Gandhinagar in his new office, Chief Minister's office. I have been already the chairman of the ambulance service, Gujarat State Ambulance Service. And that connection, I used to meet him every 3 months. We run 15,000 ambulances. It's the largest ambulance service in the world. We save about 1,000 lives a day. 100 to 150 children are born in the moving vehicles. So efficiently done. This is a favorite project of Chief Minister Narendra Modi. So when I met him, a month before he became the Prime Minister of India, I met him in his new office. He said, that is my favorite subject, the only thing we do for the poor. Anybody rings up 108, your people go and save them. So then I asked him a question. Sir, your Chief Minister's job is a full-time job and you are a man of perfection. Where will you find the time to discharge the duties of the Chief Minister of Gujarat, at the same time campaigning for the Prime Ministership of India, traveling all over the country? India is not a country, it's a continent. Where will you find the time and energy? Please listen to this. He told me, Karthikeyanji, I get up at 5 o'clock in the morning. I am telling this for young friends. Narendra Modi ji told me in 2013, he said, I get up at 5 o'clock in the morning, 90 minutes of yoga, pranayama, meditation. Without that, I don't start the day. So I don't know what fatigue is. He said, you come at 10 o'clock in the night, you will see me here, or in the home office, or in the districts. So when I go to a management institute, they say, where is the time for us to do yoga and meditation? I said, are you busier than Narendra Modi ji? And I want to tell you, even today, he does it 2 hours a day when he is in Delhi. I know very well. The busiest man in the world, perhaps, not only in the country, if he can, he said, because of that, he said, I don't know what fatigue is. You see the enormous energy with which he is moving around all over the world. Right? And you see him always calm, cool. Wow, how many challenges in this country? Every day, 2 hours a day. If the busiest man in the world, like Narendra Modi ji, can spend 2 hours for his body, for yoga, meditation and pranayama, now tell me, ladies and gentlemen, how can any of us say we are too busy? So that is the point at which I want to talk to you. So health is our basic right. So as everything else has been covered by others, I want to tell you fundamental duty and fundamental right. When health is lost, everything is lost. The Creator, the Divine, the nature, by whatever name you may believe, He has created us in perfect health, and everything in the cosmos, everything going on, millions of planets going on, all in order. That nature is perfect. Why is it we are not healthy? Because of our own wrong lifestyle. So otherwise we are destined to lead a healthy, robust life till the very end of our life on the planet. No doubt our longevity has increased, but do we also live a healthy, happy, peaceful life? While science and technology have given us more comforts and facilities, individuals experience constant stress
of the individual, family, society. Society is in disharmony. The countries are in war with each other. Planet Earth is facing unprecedented environmental crisis. Mother Earth is crying for relief. Why do we face decreasing challenges to our physical health, mental health, emotional health, spiritual health, and the health of the planet? Here, an organization like this, where science and spirituality go together. So here you are taught about spiritualistic science and scientific spirituality, and tell you. So WHO says health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease. You must add also spiritual wellness, emotional wellness, social wellness, cultural wellness, and all that. So I want to only tell you, please focus your time and energy on your health. Health is, if you are healthy, you can achieve anything. If you are not healthy, you become a liability to the family, to the nation, to institution. You see the dynamic people running around. I've been watching it here. So much of energy because they also, Dr. Vishnath Karat, Mr. Rahul Karat, where do they get all this energy? Because of spirituality. They believe in spirituality, yoga, meditation, and all that. All I want to tell you, there is a lot to be shared with you, but I want to take, there's no time to all that. I will only say this. Also acceptance. Acceptance life as it is. And also gratitude. Be grateful too. If you count the blessings, there are so many things you have to be grateful. And don't blame game. We create our own hell or heaven. I can be happy if I follow certain right way of living, right food. I would strongly advise you plant-based diet. You will see, unless the world changes to plant-based diet, the globe, you cannot save the planet from destruction. Global warming, glaciers are melting, seawater level is rising, all the coastal cities are going to be flooded. All the new pandemics are coming because our leading a selfish life, over-exploitation and all that. Gentlemen, my only appeal to you is, please spend at least an hour every morning or evening for your physical health, mental health, spiritual health. Yoga, meditation are the best way. These are the technology given by ancestors. The whole world is accepting it today now. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much, sir. A big round of applause, my friends. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. And now it's time for the most important questions and answers, for which I would like to request all the dignitaries to please come forward. I request Shri Satish Mahanaj ji, Dr. K. Karthikeyan ji, and Advocate Krishna Allavaru ji to kindly come forward on the mic. This mic, please. Okay, my friends, this is the most important part of Bharatiya Chhatra Sansad, and I would say most important feature of Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to share with all the dignitaries, those who are standing on mic. Sir, the question would come to you. You would be able to see the student on the screen, which is on the left-hand side or right-hand side. You will see the student on the screen. The student is asking you question live from those podiums, which you see on our left and right-hand side. Okay? But it's practically not possible to see. That's why we have arranged these screens for you. I would like to request all the students, those who are asking questions, and I would like to request all the dignitaries, those who are answering, both to please be crisp and precise so that I can take as many questions as possible. So I will try to take maximum questions only if you help me with chota sawal, chota jawab. Thank you very much. The first question is coming from podium number 1, Aryaman. Aryaman, just tell us your state and your question, please. I'm from Maharashtra. Okay, your question, please. To what extent should the government accept criticism before acting using the sedition law? Your question is for? My question is for the speaker from Tamil Nadu, okay. Ms. Nandini. I think, no. Okay, the question is, to what extent should criticism be accepted
by the government before using the sedition law? Anyone from the stage, please? I think Karthikeyan sir would be able to answer it much better. Yeah. Mike. Yes. You know, as they say, I have the freedom to walk with my walking stick. But the liberty is, it should not hit the man behind me or by the side. To that extent, you've got the liberty. As long as it doesn't hurt anybody's feelings or national interest, yes, you can do it. But your speech should not go to the extent of hurting anyone's feeling, religion, caste, or it amounts to anti-national, provoking ill feelings against the community or the country. It's allowed. Beyond that, yet it has to be treated as unlawful and they should be prosecuted. Freedom is not uncontrolled license. It's not a free license. Freedom is, you can express as long as it doesn't affect others. Okay? Yes, sir. I think the next question is coming to us again from podium number 1 from B. Sahithi. Are you there? Yes. Please go ahead. Just share your state, your question, and your question is for whom? Go ahead. Go ahead. It's working. No, it is working. We can hear you. You are from Hyderabad. Go ahead. And my question is, even if we have freedom of speech or even if we are crossing or not crossing the Lakshmana Rekha, people will be judging us. So there will be a fear for the people that these many people are not judging us. So how will you convince them? What is the solution? Got it. And I think your question is to Satish, sir. It is for all the dignitaries on this stage. Yeah, okay. Can you repeat the question, please? It was not The clear. question is, even if, yeah, that is actually sensitive. If you touch it, it will. Hello? Yeah, the question is, even if we have freedom of speech or if we are crossing or not crossing the Lakshman Rekha, people will keep judging us. How to deal with it? That is why we have laws and judiciary. Any man with a common sense will know what is right, what is wrong, and we also have got fundamental duties. Our constitution is fundamental rights, all right, but it's also fundamental duties to prevent these irresponsible speeches. Yes, sir, please. People will judge your concerns when you are talking about the freedom of speech, whether this is right or wrong. As I said in my speech, that people want to hear what they want to listen to, what is in their personal interest. And when I talk about the patriotism of the nation and the states also, so people are more concerned about what you are saying, which reflects your thoughts towards the state and towards the nation also. So if you are speaking anything in the interest of the nation, I think that people will judge you positively. And if you are talking about self-interest, right, then people may think that you are talking about self-interest and they may judge you in wrong manner. Right. So whenever you speak, you will have to speak in the interest of the society, in the interest of the nation, I think. True, true. Thank you very much, sir. Anybody else who would like to share? Okay, thank you. The next question is coming to us from podium number 3. Aditi Sharma would like to ask the question. Aditi, are you there? Yes, sir. Aditi, your state, your question, please. Am I audible? Yes, loud and clear. Go ahead. I'm from Uttar Pradesh. And my question as a youth is, our constitution is guaranteed freedom of speech and expression since its establishment. As per the World Press Freedom Index published in this Tuesday, India slided down to 158th position from 150th position from the 142nd position out of the 180 countries in the world. So what are the necessary reasons for that? Okay, I think this question applies to all the dignitaries. I would like to request all of you to please answer quickly in short. Who are sitting in judgment? Yeah, that is important. Who are sitting in judgment? Who decide this?
in those countries, are they allowing any such type of speech to be made? I don't think you should give too much importance to these type of rankings. There's a lot of people prejudice against us. It depends upon the world media also. They're highlighting anything going wrong anywhere, but these type of things are there everywhere. You know, we have to be responsible. We are confident enough, responsible enough. But you're right, and we have got an excellent rule of law. We believe in rule of law. We have got an independent judiciary. True. And I think they intervene in time and give all the proper intervention. So Parliament is there, discussions take place, and we have to accept our own judgments. Supreme Court is the final authority. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you very much. Anybody else would like to add? Yes. The question is, we have, the Constitution allows us and guarantees freedom of speech in India. But still, we slided down from 142nd to 150th position recently in rankings, even if we have freedom of speech. Can you please guide us with the reasons and what we should do? Actually, the perception, what I told is this perception, we all have to change it actually. Most of the times when we are talking about the public representative, public system, so we don't rely on that because we are finding aloof from that system. We find something we are left out. So we will have to get involved into the system. Then also we'll come to what the actualities are. When we really come to know what actually is, then only we'll be in a position to say that we are on the right track. So we all have to be part of the system where we may rank much more higher. And as Honorable Sir has said, who are the people to judge? True. So anybody come and judging it and giving their own views and statements, that does not matter so much. True. Thank you. Thank you very much. The last question is coming to us from Sarthak Chaudhary. Are you there? You want to share? Please go ahead, sir. So I'm from Maharashtra. Hold on for a moment. So you can come here if it's not working. Hi, I think the question is that on some particular ranking, we have dropped down the index. What could be possible reasons for this? I'm not going to comment on the accuracy of that report because I do not know the report and I do not know what's behind it. But typically, the parameters that they look at is how strong, independent, unbiased the media is, how active the institutions are, which is supposed to protect that particular right or set of rights, and in general, how do the people in the country feel about it? So I'm assuming that that particular index, whether they have measured it rightly or wrongly, I'm not here to comment. True. But I'm assuming that on these parameters, they felt we slipped. Thank you very much. But still, we have one more question coming from Sarthak Chaudhary. Are you there, Sarthak, at podium number 3? Yes, please go ahead. So I'm from Maharashtra. My question is for the learned advocate Krishna Alivaruji. In the backdrop of Shreya Singhal versus Union of India judgment, can executive once again attempt to limit freedom of expression? Yeah. So we didn't follow the question. Yeah. The limited part that I got is that in the context of a judgment, can the executive once again limit freedom of expression? Did I get that question right? Yes, sir. Yeah. So I honestly believe that in the context of that judgment, or even beyond it, the executive, the judiciary, and the other institutions are definitely
justifiably within their rights, as Karthikeyanji explained, to draw limits to this fundamental right if there is a real and imminent danger of any violence, harm, or compromising of national security, among a list of other limitations. So I wouldn't say that any of these institutions are bound by what a precedent says, but there is enough that the Constitution says when, how, to what extent they can limit and should limit this right. Thank you very much, sir. The last question coming up to us from podium number 1, Sushant Patil. Are you there, Sushant? Yes, your state and your question. Sir, I can see your question is really long, Sushant. Please make it crisp. Thank you. Sir, I want to ask this question to Karthikeyanji, sir. Please go ahead. Sir, recently Parliament declared some of the common words as unparliamentary, like corruption and dictator. Sir, is it correct to declare it? Like, isn't it a typical line drawn for the freedom of speech? Got your question. Sir. It's a question of judgment, depending upon the time, where, how made, and is it likely to give justification for violence or riots. This country, unlike many other countries, we have numerous religions, numerous castes, all living together. We are not a country with only one religion or one caste or something like many other countries. So we have to take care of the sensibilities of all institutions, major and minor religions, castes, all that, we have to respond. True. If any of our observation is going to cause insult or provocation to some groups to indulge in counter-violence or talk, we have to put it down. Because freedom doesn't mean license. Freedom of expression, up to the extent you can express your views, but without hurting others, without hurting the sentiments of other castes, communities or religions. We have got, since this is the important, I know very well, I've been in the district, I've been the Commissioner of Police and all that. Depending upon suppose in a major religious festival, somebody said, there'll be huge procession, it can provoke them into violence. Right. We have to safeguard the public order is the primary duty of the government. Public order. Anything against the public order has to be put down. And against it, you can always go to the freedom of press is there, freedom of, you can rule of law. Courts are there. Courts intervene very effectively. We have seen in recent times, the Supreme Court has intervened and said no, the action taken by the government or the policy is not correct. So we have got remedies. Yes. Yeah, thank you. Thank you. Yes, sir. Please. This was very important questions asked by one of my friends. And I would like to remind him that there was a news in the national media and simultaneously print and electronic media that these words have been said unparliamentary by the parliament. This have been declared unparliamentary. But I would like to remind you, on the other hand, the next Honorable Speaker of Lok Sabha and the Lok Sabha Secretariat also specifically said that this has not been given by the Parliament or any of the offices which say that these words were unparliamentary. There were pre-incidents for the last few years when some or the other ways these words were sponged from the proceedings of the House. It is not what you say. It is not how you say and when you say. अब जिस समय हम कोई बात कहते हैं कि बाप कहना भी तो पिता को ही बाप कहना है, तो कहते हैं तुम्हारा बाप कैसा है, तो उस बात को अगर उस समय पार्लियामेंट ने देखा कि ये इस समय यहाँ पर इसको स्पंज करना है, तो उन्होंने कहा ये दिस इज नॉट द राइट वे. आप कहोगे बाप पिता को बाप कहेंगे कि उनके भी तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, दोनों बातों में फर्क होता है. तो लोकसभा हैज नेवर सेड, बिकॉज आई बीइंग ऑन दिस स्टेज, व्हेन आई एम कोटिंग ऑनरेबल Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, he himself had a press briefing on the next day, giving
clearance and stating that these type of words have never been said by the Parliament or the Parliament Secretariat, that these cannot be used in Parliament. So you must, whenever you ask the questions, you must not be, you must be clear, I said, that what has been said. And after also, the following statement, what has been given by the Honorable Speaker, you must know that also. Thank you very much. Thank you, dignitaries. I request you to kindly accept the chairs. Thank you very much for your participation in question and answer round. And dear students, now it is time for the most important part in this Sansad. All you parliamentarians are now requested to take out your mobile phones, including the dignitaries on the dais. We are now going to have the voting on resolution. I would like to request my technical team to display the resolution. I'm going to explain how this resolution would be voted upon. You can see a big QR code. You're requested to scan this QR code. It will automatically open in your browser, and a web page will open on which you will be able to vote. If this QR code doesn't get scanned, then you can log on. You can see in the right-hand side top corner, you can log on into live.voxvote.com and simply enter the PIN number as 55150. You will be able to land on the same resolution page as the QR code. You don't have to do both. It is a or, so you can scan the QR code. If it doesn't work, then you go for logging on to the website. Now let us see the resolution. We, the participants of the 12th Bharatiya Chhatra Sansad, affirm that national unity and integrity, social harmony and individual dignity constitute the Lakshman Rekha of the freedom of speech. We pledge to adhere to this line with exercising the freedom of speech. हम 12वीं भारतीय छात्र संसद के सहभागी यह पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत गरिमा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लक्ष्मण रेखा का गठन करती है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए इसका पालन करने का संकल्प लेते हैं। My friends, your time has started. We will take only 60 seconds to come up with the results. I request you to quickly complete the procedure. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से। Thank you. I think we are now good to go ahead with the results. I request my technical team to process the result and take us. Okay, the resolution passes with 98.7% votes. A big round of applause, my friends. It's a huge, I can even say absolute majority. Thank you very much for your wholehearted participation. My friends, with this, I would now like to request and invite the Registrar of MIT World Peace University, Dr. Prashant Dave, to propose vote of thanks. Good afternoon to all.
I stand before you to propose the vote of thanks on behalf of Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, and 12th Bharatiya Chhatra Sansad. First of all, I would like to extend my warm gratitude to the student leaders who presented their thoughts to the entire gathering present over here. Ms. Aditi Dwivedi, Pratap Raj Tiwari, Nandini Ravi Shankar, Sudhanshu Dahake, and Akshata Manshi Deshpande. Their views and their expression of thoughts are really reverberating, and we expect our student leaders to come forward and express their views in the same manner with the same zeal to motivate other students as well. I extend my warm gratitude to the chairman of the session, Sri Satish Mahana sir, Honorable Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly. I extend my gratitude to Sri D.R. Karthikeyan ji and Advocate Krishna Allavaru ji. Thank you, sir, very much. Thank you very much, sir, for being present over here. We extend our congratulations and greetings to the award winners upon conferment of Adarsh Yuva Vidhayak Samman to Sri Tushar Kanti Behera sir, and conferment of Yuva Adhyatmik Guru Samman to Pujya Shri Indresh Upadhyay ji. Sir, it's an honor you accepted our greetings and our congratulations. We are really overwhelmed to know that you have accepted our the awards that has been conferred upon you. Thank you very much for acceptance. I extend wholehearted greetings and I extend wholehearted gratitude to all the student ambassadors who have wholeheartedly put in a great show. A warm greetings to all the student ambassadors. I extend wholehearted greetings and gratitude to the students. Last but not the least, many staff members, our faculty members behind the curtains, they have worked and toiled hard to make this event a great success. And all the students who have raised questions from different dais, I congratulate all of them and thank all of them to come up and raise their questions. I thank the entire panel of this session to answer very patiently. Thank you very much, sir. We look forward to your guidance in future as well. Finally, a sense of gratitude and expression of gratitude to Rahul Karad sir and Dr. Vishwanath Karad sir for giving us this platform and opportunity to discuss on this particular topic, freedom of speech, where to draw the line. Thank you all. Thank you very much, Registrar sir. Thank you very much for proposing vote of thanks. My friends, tomorrow is going to be the most exciting, I would say, I can say this for every day, but tomorrow is going to be a very, very special day for all of us. Tomorrow in the session 2, Dynasty, the Untold Truth of Every Political Party, and the conferment of Ideal Legislative Assembly Speaker Award on Dr. C.P. Joshi ji, Honorable Speaker of Rajasthan Legislative Assembly, we would be able to witness. We will have Dr. Meera Kumar ji in the session. We will have Shri Shivraj Singh Patil ji. We will have Suresh Kumar Khanna ji, Hiralal Alwa ji in session 3. We will have Ragini Sonkar, Supriya Shinonate. We will have Bhagyashri Lekami, Kulvinder Bagha. We will also have in session 3 Simran Khan, then Sanjay Singh ji, Shri N. Gopala Swami ji, IAS retired Padma Bhushan, Chancellor of National Sanskrit University. We will have Shri Vijay Kumar Sinha ji. We will also have Shri Mohammad Harun Rashid ji, Divya Mahipal Mandran ji, Praveen Pathak ji. So tomorrow we will also witness Prahlad Kakkad ji and Abhinav Mohanty ji. We will also have the presence of Ravi Rai, Akhila Yadav and many more. My friends, tomorrow's session will start sharp at 8:45 a.m. So all are requested to be seated from 8:30 a.m. sharp tomorrow morning. Now we will have the Youth to Youth Connect session. The Bharatiya Chhatra Sansad respects its participants' urge to contribute in the process of nation building. Bharatiya Chhatra Sansad also recognizes the fervor and commitment of the young student leaders like you to undertake the action projects which would help society and help you evolve as a leader. Answering to your call for this great purpose, this year we have introduced a new dimension to Bharatiya Chhatra Sansad,
which will be known as BCS Youth to Youth Connect. A new dimension to Bharatiya Chhatra Sansad, which will be known from this year. This innovative concept is a brainchild of Sri Rahul Karad, founder-convener of BCS. This idea is students are interested to similar action areas to develop and to come together under the banner of BCS Youth to Youth Connect and develop the action plan for 1 year. Subsequently, they will implement this action plan in their city, region or state. In this way, BCS Youth to Youth Connect program will drive the participants from inspiration to action. You all have registered for this special program. I think in the last session we showed you the QR codes. For this special program, now you all are required to go to the respective venues allotted to you for your action area. Each participant will be presenting his or her thoughts and actions on the chosen action area in the hall or designated classroom. Tomorrow, in this very Pendal, Swami Vivekananda Sabha Mandap, we will start our session at 8:45 a.m. sharp. You all are requested to be seated by 8:30 a.m. Thank you. Dear student participants, you can see the list of halls or rooms where the topics of Youth to Youth Connect are going to be conducted. There are 10 different topics. Topic number 1 to topic number 8, they are going to be conducted in Chanakya building behind this stage. And then last 2 topics, topic number 9 and topic number 10, they are going to be conducted here only in this pandal. For registering to the topic, you just need to scan the QR code so that you get registered to the topic of your interest. You can even directly reach out to the venue mentioned for that particular topic, and going there you can register for that topic. I request the technical team to please display the venue arrangement for Youth to Youth Connect. Thank you. मिलजुल कर अब काम करेंगे, आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद